Hello friends, today we are moving to another topics. Today's topics we are discussing about the Bakar. Bakar is an important type of historical documents of medieval times. It is contains eulogies and heroes and stories of historical events, battles, lives of great men. Bakar मतलब एक type of prose stories or writings. Such kind of writings are called Bakar. It is mainly talking about. It is contain the stories of heroes and stories of historic events, battles, and lives of great men. Mainly these are mentioning in Bakar. And Marathi Bakars are of various types. Sabhasad Bakar was written by Krishnaji Anand Sahab uh, Sabsad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It was one of the famous Bakar, Marathi Bakar, and it is an important Bakar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and we got mainly the information about our great Chhatrapati Shivaji Maharaj from this Bakar, and Bahu Sahebanji Bakar describes the Battle of Panipat, one of the another great battle between the Maratha Empire and the British. Maratha Empire and the British. And another Bakar entitled Panipatachi Bakar is also about the same event. That's also discussing about the Battle of Panipat. Then Holkranji Kaifiyat provides information about the Holkers and their contribution to the Maratha rules. Another one that is providing information about the Holkers and their contribution to the Maratha. And Bakars can be divided into various types of such as biographies of kings, dynasty history, descriptions of events, history of sect, autobiographies regarding grievance based on mythologies and state administration by a king. These are the main things. First one is biographies of king, एक राजा की biography, and historical history of a dynasty, and next one is a description of events history of a sect, एक ग्रुप ऑफ पीपल का हिस्ट्री और उस लोगों का एक इवेंट एक कुछ इंसिडेंट्स एक स्टोरी के जैसे बता रहेगा. नहीं तो ऑटोबायोग्राफी से हम खुद हमारा स्टोरी लिख रहा है वैसे ऑटोबायोग्राफी से रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स फार्मिंग के बारे में नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा. एंड बेस्ड ऑन मिथोलॉजीज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ मिथोलॉजी मिथ्स का बारे में हमको बताएगा. नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट बाय ए किंग. These are the mainly it divide Bakars are divided into these types, these categories. Next we are moving another topic, that is historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose. So इंडिया में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कब शुरू हो गया? 20th सेंचुरी में, which means the beginning of 1900. Indian archaeological exploration research stayed under the British rule. Mainly started under the British rule because during that time India was under the control of British. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham. कनिंघम उनका अंडर में बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशंस हिस्टोरिकल रिसर्च शुरू हो गया इंडिया में. द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ही इज़ नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे. देन ही चोज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो मेनली जो कुछ साइट्स बताया, प्लेसेस बताया, वो जो प्लेस में उन्होंने पहले बार ये सर्वे से शुरू किया. एंड द हैरपन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. सर जॉन मार्शल का टाइम में हैरपन सिविलाइजेशन हम डिस्कवर किया. बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी इज द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड द 3rd millennium BC और इवन अर्लियर. सो वो वैसे वो जो उनका डिस्कवर में से हमको थर्ड BCE मतलब 3rd BC में क्या हो गया उसके बारे में हमको कुछ क्या था इंडिया में ऐसे कुछ नहीं तो उसके भी पहले से इंफॉर्मेशन हमको मिल गया. देन
Many British officials in India wrote about Indian history. Their writings displays strong influence of colonial policies of the British. ब्रिटिश लोग ने इंडियन हिस्ट्री लिखा, लेकिन उसमें से ज़्यादा उस लोगों का पॉलिसीज़ के बारे में बता रहे थे. 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. One of the another famous book, that is, the name of the book is The History of British India, written by James Mill in the year 1817. This was the first book of Indian history written by a British historian. इंडिया की हिस्ट्री पहली बार एक फॉरेन आदमी ने लिखा, उसका नाम है जेम्स मिल. It clearly reflects the absence of objective perspectives and prejudice about the various aspects of Indian culture. लेकिन उसमें से भी ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज और कॉलोनियल पावर के बारे में बता रहे और इंडियन पीपल के बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहे. And the history of India written by Mountstuart Elphinstone, governor of Bombay, now in Mumbai, was published in 1841. One of the another book, The History of India, written by Mountstuart Elphinstone. The period of Maratha Empire is very important to the Indian history.